probability, and this is for CBSE class 9, class 10, as well as class 9, class 10, as well as class 12th students only. And people who are interested to learn probability will also be mentioned over here. Okay, so in this class of probability, understand that this particular probability is mostly about the collection of the events. How you are going to collect the events in the probability. So one of the most simplest type of event in the probability is coins. See, in this probability, people are little bit uncomfortable about this subject. The reason is that this particular subject of probability is mostly based upon the counting. How do you count the stuff? And one of the basic way of counting the stuff is to to use some combination theorems and use something which is called as simple counting. And one of the easiest way to solve this particular problem is to write the sample space of this particular probability stuff. Okay, so how you will write this sample space is becoming a key for this particular concept of probability. One of the most easiest and most interesting type of concept in the probability is the head and tail. So what is head and what is tail? I know that in a cricket match you might know that what is whether you want to decide for a batting or a bowling. So how you're going to decide? So you might have seen in the cricket matches that there will be head and there will be tail, and captain tosses the coin. Two team captains come together with the match referee and they toss the coin, and later what happens is that one of the person tosses the coin and one of the person calls the toss, whether it is head or tails. So depending upon the outcome of that particular random event, what happens is that in that particular random event, this the match referee is going to make a decision that which team is going to win and which team is going to bat first and which team is going to bowl first. So probability is everywhere in life. Probability, you will see probability, high level calculation of probability in the elections also, that what is the chance that some XYZ person will win, what is the chance that some X party will win, what is the chance that some Y party will win. You will see probability that okay, what is the chance that I am going to bat first, what is the chance that I am going to write an examination and pass this examination. And there will be oi, Karadi boy, oh, hello, hi, hello, welcome to my stream. Okay, now what happens is that in the probability happens everywhere in life. Okay, not even in the probability also happens in the political spectrum, that which party is going to win. Probability also takes place in our life also, whether what is the chance that I'm going to get an A in the subject, and what is the chance that I'm going to get something in the subject, and what is the chance that I'm going to win this particular game, and what is the chance that if I am going to win, and if I'm going to win this game, what is the chance that what will happen over here. So this is one of the most important subject in the probability. Okay, so probability is everywhere. Now there is also people think that okay, what is the chance that whether I'm going to wake up 8 o'clock in the morning, there will be a chance that what will be the highly probability that I might catch a train at right time. So there will be very very high chances that most people deal with the probability, and most people calculations also involve in the calculation. So therefore probability is everywhere, you cannot ignore probability. One of the foundations of this particular probability is the lies in the counting. Okay, we will start this probability with some small concepts of coins in the beginning, and later we are going to develop some concepts where we are going to get much better in the subject of this particular
subject. Okay, so I'm going to flip my camera, and you can see that that we're going to deal some probability over here. Okay, 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 there you go. Okay, there you go. Okay, see, over here probability is one of the most easiest way becomes we'll start with something which is very simple stuff. Okay, one of the simple stuff is coins. Okay, coins are one of the coins are one of the most easiest part of this particular in this particular stuff. Okay, if you are able to handle the coins problem, then what we can happens is that you can able to deal with any type of problems in the probability. So how can you deal with the probability? So what will happen is that in case of coins, all formula you need to remember is 2 power n. Okay, this is the only formula that you are going to learn, and we can going to make miracles, because 2 power n is the counting of sample space if all these events, counting of all these events in a coin toss experiment. Okay, in a coin toss experiment. So okay, in a coin toss experiment, see, in a coin toss experiment you might be very familiar with some called as hello, hello, thank you very much. Hello Mr. Little Snowy, hello Mr. Saturn, hello Harsh Boy, thank you for your comments. Okay, hello everyone, welcome to my stream. We are discussing probability over here, and I'm telling that one of the easiest probability is having is the coin toss case. Okay, the coin toss case is one of the easiest probability we can able to handle. Okay, now let's go to some one of our explanations. See, coin toss is something which I have discussed right now by मैं अकेले हूँ stream पे. Okay, no problem, you can listen. If you want, I will write also, Mr. Little Snow. If you are interested in probability, I will definitely help you. सी, अगर आपको हिंदी में आती है तो मैं हिंदी में बात कर लूँगा, नो प्रॉब्लम. ठीक है, हम probability के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. probability के बारे में हम लोग डिस्कस करने के समय पे हम लोग ये जाना है कि हम लोग अभी तक ये डिस्कस किया कि probability जो होता है हर लाइफ में होता है. ठीक है, probability की जो कैलकुलेशन होती है वो हर जगह पे होता है. अगर आप लेते हो कुछ इलेक्शंस लेते हो, ठीक है, क्या चांस है कि एक पार्टी जीतेगी, एक पार्टी हारेगी. और अगर आपको ये भी आता है कि अगर आप क्रिकेट खेलते हो तो कौन सा टीम बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी, कैसे डिसाइड करते हैं. ये सब रैंडम अगर कॉइन टॉस से डिसाइड करते हो. अगर आप कोई भी रैंडम इवेंट अगर लेते हो कि हाँ, आज मैं सुबह 6 बजे उठने की कोशिश करूँगा, कितना चांस है कि आप कैसा है करेंगे. हाय लिटिल स्नोई, वेलकम टू माय स्ट्रीम. वी आर डिस्कसिंग प्रॉबिलिटी. और ये भी है कि कितना चांस है कि मुझे मैथ्स में या फिर किसी भी मेरी फेवरेट सब्जेक्ट में मुझे 90% से ज़्यादा मार्क्स मिलने की चांस क्या है. और हमारे डेली लाइफ में भी ऐसे होता है कि कितना चांस हो सकता है कि आज बारिश गिरेगा. ठीक है, और कितना चांस हो सकता है कि अगर बारिश गिरेगी तो क्या हो सकता है कि आज बहुत ज़ोर से बारिश गिरेगी या हल्का बारिश गिरेगी. ठीक है, ये सब प्रॉबिलिटी है. लाइफ में हर जगह पे आपको प्रॉबिलिटी मिलेगी. अगर आप किसी डिलीवरी एक्सपेक्ट करते हो कहीं से, ठीक है, तभी भी आपको एक्सपेक्टेशन रहती है कि हाँ, मुझे फ़लाना जगह से डिलीवरी आनी है तो मुझे कितना वक्त लगेगा, 10 दिन लगेगा या 2 दिन लगेगा, कैसे आप श्योरली बता सकते हो. ये सब तो चांसेस है. बहुत लोग होते हैं जो जुआ खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं. ठीक है, कार्ड्स में भी उनको प्रोबेबिलिटी लगती है, कितना चांसेस है कि वो जीत सकता है. बहुत लोग पोकर खेलते हैं और बहुत लोग होते हैं कि लूडो भी खेलते हैं. जब लूडो खेलते हैं तब क्या होता है कि आप लोग को
एक मन के अंदर एक नंबर होती है कि हाँ, मुझे अगर 8 मिल जाएगा तो मैं आगे बढ़कर मैं जीत जाऊंगा। हाँ, मुझे अगर 6 और 2 में गिरेंगे तो मैं जीत जाऊंगा। लूडो में भी आपको क्या होता है कि लूडो में भी आपको नंबर आपको देना पड़ता है कि अगर मुझे 2 छक्का गिर गए तो मेरे को 12 मिल जाएगा, मैं जीत जाऊंगा। तो ये प्रोबेबिलिटी होती है। ये जो प्रोबेबिलिटी होती है लाइफ में हर जगह पे होती है। गेम्स में आप देख सकते हो, अगर आप देखोगे तो कार रेसिंग में भी आपको प्रोबेबिलिटी लगती है। हर जगह पे दिखती नहीं है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी जो चीज़ है वो हर जगह पे होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर प्रोबेबिलिटी है तो डेफिनेटली लाइफ में आपको मिलेगा, डेफिनेटली लाइफ में कहीं ना कहीं। तो हम बात कर रहे थे कॉइन टॉसिंग के बारे में। आज का दिन हम लोग सिर्फ कॉइन टॉसिंग के बारे में सीखेंगे, और आज का दिन हम लोग सिर्फ कॉइन टॉसिंग के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, मैं कैमरा को फ्लिप कर रहा हूँ और लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज का दिन हम लोग कॉइन टॉसिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। कॉइन टॉसिंग में हम लोग अभी तक सीखा है कि अगर हमारे पास अगर एक कॉइन है, उसको अगर हम लोग 2 बार उछालते हैं, टॉस करते हैं, ठीक है, उसका सैम्पल स्पेस होता है, उसका सैम्पल 2 पावर 2, दैट इज़ 4। द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आर 4। तो 4 इवेंट्स होते हैं हमारे पास। आप पूछ सकते हो कि क्या क्या इवेंट्स हो सकता है। अगर एक कॉइन 2 बार उछालेंगे, हमें आ सकती है हेड हेड, उसके बाद हमें आ सकती है हेड टेल, उसके बाद आ सकती है टेल हेड, उसके बाद आ सकती है हमारे पास टेल एंड टेल। दिस इज़ आवर sample space. Okay, this is our sample space. This is our sample space. Okay, ये हमारा सैम्पल स्पेस है। तो ये हमारी सैम्पल स्पेस है। अगर हमारी सैम्पल स्पेस ये होती है, तो अगर दूसरा प्रॉब्लम होता है कि 1 कॉइन को अगर हम लोग 3 बार टॉस करते हैं, ठीक है, तो सैम्पल स्पेस क्या होगा। हमारा फॉर्मूला है 2 पावर n, तो इसको 2 पावर 3 कर दो, आपको मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज़ इक्वल टू 4 इंटू 2, दैट इज़ इक्वल टू 8। हम लोग के सैम्पल स्पेस में 8 है। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस यहाँ पे बहुत की रोल प्ले करता है। सैम्पल स्पेस का मतलब होता है कि सैम्पल स्पेस मीन्स द collection of all events. Okay, sample space means collection of all events. ठीक है, सारे इवेंट्स को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग सैम्पल स्पेस। हमने अभी तक देखा है कि एक कॉइन को अगर 2 बार उछाला तो 4 है, एक कॉइन को अगर 3 बार उछाला तो हम लोग का रिजल्ट 8 है। अगर एक कॉइन को 4 बार उछालेंगे then it is nothing 4 into 4, you will get 16 as a sample space. Okay, this is the sample space of a probability. So sample space is very important and it will comes in a life very much. Then again sample space we will discuss. Okay, sample space we are going to discuss. See, sample space for a coin tossing 5 times. Okay, what is the sample space for coin tossing 5 times? See, the sample space formula is 2 power n. The sample space formula is 2 power n. So what you get is 2 power n, that is 2 power 5. So what you ended up is 16 into 5. So you can have 50 plus 30, that is equal to 80. So 80 are the number of events in the sample space. Okay, and what another question, what is the number of sample space events
that happens if a coin is tossed 6 times. Okay, what is the sample space if a coin is tossed 6 times? Simple answer is 2 power 6. So 2 into 2 into 2, that is 8, and one more you will get, that is 8 into 8, that is 64. So 64 are the total sample space. See, sample space is one of the most important concept in the probability. If you don't know this sample space, you cannot go further in the probability. अगर आपको sample space नहीं आती है, sample space नहीं करते हैं, तो सबसे important यह है कि आप पहले sample space को लिखना सीखो. कॉइन टॉस की जो बात होती है उसमें क्या होता है कि सैम्पल स्पेस होता है, और बाद में सैम्पल स्पेस लिखने के बाद में ही आपको टॉसिंग की इवेंट्स में इवेंट को कैलकुलेट करने में आपको एग्ज़ाम में या फिर कहीं भी आपको सवाल पूछा जाता है. ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं. एंड लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन. हेलो गाइस, वेलकम टू माय स्ट्रीम. हम लोग अभी आप सैम्पल स्पेस पढ़ रहे हैं हम लोग, और सैम्पल स्पेस में हम लोग ने यहाँ पे सैम्पल स्पेस में हमने आज तक डिस्कस किया है कि एक सैम्पल स्पेस के अंदर कैसे हम लोग फाइंड करते हैं. अगर हम लोग कॉइन टॉस की इवेंट जो होती है वो सबसे इजी इवेंट होती है और सबसे छोटी इवेंट होती है. उसमें हम लोग ये देखते हैं कि एक कॉइन अगर हम लोग टॉस करते हैं तो हम लोग उसको कैसे उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं. ठीक है, अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर हमें एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हो सकती है. अगर एक कॉइन को 2 बार उछालते हो तो क्या होता है कि हम लोग के पास 4 ऐसे रिजल्ट्स होते हैं उसके बारे में. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी लाइफ में हर जगह पे होती है. बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या मैं फ़लाना ठिलाना जॉब कर पाऊँगा, क्या मैं आज का दिन जाके बारिश गिरेगी या नहीं, क्या आपको लगता है कि मुझे गर्लफ्रेंड मिलेगी या नहीं, क्या आपको लगता है कि आपको गर्लफ्रेंड मिलेगी या नहीं. ठीक है, कितनी चांस है कि आप बहुत सक्सेसफुल हो सके लाइफ में. सो हर चीज़ में प्रोबेबिलिटी रहती है, और प्रोबेबिलिटी जो होती है वो बेसिक होती है और हर लाइफ में होती है. आपको अगर कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे पूछिए, तो नो प्रॉब्लम, मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा. यस, आपको कुछ क्वेश्चंस है तो प्रोबेबिलिटी के ऊपर या फिर कोई अदर क्वेश्चंस है तो कमेंट कीजिए, मैं सवाल का जवाब दूंगा. नो प्रॉब्लम, बी फ्रेंडली एंड आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस. अगर आपको कुछ पूछना है तो आपको लगता है कि हाँ मेरे मन के अंदर सवाल है, अगर प्रोबेबिलिटी के बाहर भी, मैथ्स के बाहर भी सवाल है, क्लास 9 में कैसे पढ़नी है उसके ऊपर सवाल है, पर्सनल सवाल है, कर लो, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा. ओके, तो हम लोग अब तक प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे. तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग यहाँ पे ये देखें कि प्रोबेबिलिटी लाइफ में हर जगह पे होती है, और प्रोबेबिलिटी जो होती है लाइफ में वो हर जगह पे आपको 9th क्लास में और 10th क्लास में और 12th क्लास में आपको प्रोबेबिलिटी देखने को मिलती है. प्रोबेबिलिटी में बेसिकली क्या होता है कि वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या होता है कि कॉइन टॉस करने वाला प्रॉब्लम होता है. ठीक है, कॉइन टॉस करने वाला प्रॉब्लम होता है. कॉइन टॉस करने वाला प्रॉब्लम के बाद आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में वीडियोस बनाऊंगा और अपलोड करूंगा. जैसे जैसे अपलोड करते रहूँगा आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जाएगी. ओके, एनी क्वेश्चंस गाइस, कैन हेल्प यू. हाँ पूछिए, नो प्रॉब्लम, कोई भी कोई सवाल पूछिए, हम मदद करेंगे. हिंदी में चाहिए तो हिंदी, तेलुगु में चाहिए तो तेलुगु में भी दे देंगे, तमिल में चाहिए तो बोलो तमिल में भी देंगे, इंग्लिश में जाएंगे इंग्लिश में भी दे देंगे जवाब.
हम लोग प्रॉबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं या फिर मैथ्स में कुछ डाउट्स है तो आप पूछ लीजिए, मैं सॉल्व करके आपको हेल्प करूँगा. ओके, व्हाट इज़ द probability if you toss a coin and get toss a coin twice hitting a head coin 2 times. See, the question is probability of tossing a coin 2 times head if you toss a coin 2 times. That is the question. Okay, so how you will solve this question? The answer is very easy. Since you have I have set the formula, the probability for a coin is 2 power n. So we have tossed the coin 2 times. So 2 power 2 is equal to 4. So our sample space is 4, and it is asking that probability of getting one head, only one head. So there is only one stuff over there in the event, and that probability is 1 by 4. Simple. There is no much complication in this probability formula. Okay, next question. Okay, next question. If a coin is tossed twice, then find the probability of getting 2 heads. Okay, so if you can't see, I can make you see over here. Now flip the coin camera. See, a coin is tossed twice, then find the probability of getting 2 heads. This is our question. Now the answer for this question is that, see, the coin is tossed twice, so formula is 2 power n. So twice means 2 power 2. Answer is 2 into 2, that is equal to 4. Okay, the coin is tossed 4. Now if the coin is tossed 4 times, now it is asked to find the probability of getting heads. See how you will, sample space is head, 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 tail, tail, head, and another one is tail and tail. So what happens is that it is asking that if a coin is tossed twice, to find the probability of getting 2 heads. So 2 heads is only 1. So our probability of event E1 is equal to number of events in sample space by number of events in the sample space. Events inside by all these number of events in the sample space. So all the number of events in sample space is 4. So what is the only event? This is the one. So 1 by 4 is the answer. If people ask percentage, you can also say 25% chance that you will get if a coin is tossed twice, then your probability of getting 2 heads is 25%. Simple. Okay, one more thing I will tell you. This is one of the easiest problem that we are going to solve today. This one we will say over here. Okay, second, if a coin is
tossed thrice. Okay, thrice. If a coin is tossed thrice, find the probability of getting 3 heads. So this is our question. So how you are going to solve this question? बहुत आसान है. देखिए, a coin is tossed thrice. So total number of events of in sample space. Are you able to see it? Make it down. So the total number of events in the sample space is 2 power n. So how many times? That is 3 times. So that is 2 power 3. 2 into 2 into 2, that is equal to 8. Okay, the total number of events. Now what is the question that is asked? The question that is asked, how many will get 3 heads? See, in this sample space we have 8. So what are those? Head, tail. Another one is head, tail. Another one is what? Tail. Another one is tail, head. Another one is tail, head. Another one is what? Come on, Ma, tell me. Another one is what? Can't see. Just zoom. Okay. Okay. So head, tail, tail, head, tail, head, and what are the else? What else are there? There are other 2 events that I might missed. So the question is that there are only 3 heads which is asked. So if they ask 3 heads, there is only 1 event. So 1 by total number of events in the sample space is 8 by 8. That's it. So that's all. The probability of this event is 1 by 8. Simple. So that's all. The third question I will solve for you. If a coin is tossed 4 times, then probability of getting 4 heads is, what is the probability of getting 4 heads? So answer is simple. See, the 2 power n is the total of events in the sample space. Okay, total number of events in the sample space, which means 2 power n is equal to 2 power 4. So which is nothing but 4 into 4, that is 16. So what is the total number of events is 16. Now it is asking 4 heads. So what is the probability? 1 by 16. So the probability is 1 by 16. This is the answer for this particular question. See, in many
See, in many situations, what happens is that in many situations, what happens is that people will also say that four coins are tossed once. In many situations, people will say that three coins are tossed once, two coins are tossed once. Okay, so in that particular case also, okay, in that particular case also, the event applies for the same thing. Okay, in that particular event also, the same formula applies. In case of coins, I am telling you, one coin is tossed twice or two coins are tossed once, or both are same, they are not different. One coin is tossed twice and two coins are tossed once, they both represent same sample space. I am telling again, one coin is tossed thrice and three coins are tossed once, they both are same. One coin is tossed four times and four coins are tossed once, they represent the same sample space. So this is very important to remember. In case of coins, only one formula is there, that is 2 power n. If the event happened 5 times, formula will say that 2 power 5. If the formula says that 2 power 5 some number is coming, that's the answer for it. If the event happened that 10 coins are tossed once and one coin is tossed 10 times, then the sample space will have 1024 number of events. The sample space total number of events will be 1024. So the art of solving the coins problem lies in the application of 2 power n formula. Okay, 2 power n formula is the one of the most important formula. Okay, just see, this is the formula, that is 2 power n. A coin is tossed twice. A coin is tossed at 2 power n. Again I said 2 power 2. If a coin is tossed thrice, then the formula will be 2 power 3. If a coin is tossed 4 times, then the formula will be 2 power n is equal to 2 power 4. Okay, if a coin is tossed 5 times, then 2 power n is equal to 2 power 5. If a coin is tossed 100 times, then 2 power 100 is the total sample space. Total sample space event. Okay, so this is the most important part to remember in the coins problem. And that's all for today. If you have anything in the comment, okay, that's all for today. If you have anything in the comment, just tell me that you need more robust content, you need which type of content to be posted. See, I am doing this particular reason that I want to help students. I want to help students who are gone in the school age, most of their time spending outside, playing with friends or doing some important, who missed education. So I am doing this only for students who missed education. Okay, if you miss education, I am ready to help. My service is there for you. Okay, see you next time. It's nice being having a chat. Let me read the chat. Can't say, just zoom. Hi Naveen, David. Hi Stephen. View this message. Harsh boy, don't be so harsh. So that's it for today, guys. See you next time. Bye.